या गुड मॉर्निंग ऑल। तो एजेंडा यू माइट अवेयर कि हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्पार्क। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल in the this session we'll go through the agenda, like what are the things we will cover in this session. Okay, so first of all we'll cover the like history of the spark, like how this spark started, what's little background. तो जैसा कि खुर्रम सर हमारे हर सेशन में बताते हैं, so we it's better to know what's the history of every component in the big data environment we are working. Okay, so उसके बाद फिर हम देखते हैं different deployment mode, how we can deploy the spark in different modes. then one देन उसके बाद हम देखेंगे आर्किटेक्चर ऑफ द स्पार्क। फिर उसके बाद हम देखेंगे बेसिकली स्पार्क ऑन यान, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लाइक विच वी यूज द स्पार्क इंटीग्रेशन विद द हडूप। ओके, एंड उसके बाद हम देखेंगे स्पार्क एपीआईज लाइक आरडीडी, डेटा फ्रेम, डेटा सेट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल सी द डायनामिक फ्रेम एज वेल। ओके, इस टाइम परमिट। और उसके बाद हम देखेंगे हाउ स्पार्क execution plan work actually, how like with the help of in yarn how spark runs on the top of yarn. Okay, and at the end we'll see the in the tomorrow's session we'll see the practical. Today will be theory only and tomorrow we'll go through the practical. Okay, so before going through the history and all that, I would like to give a little brief history, or we can say the introduction about myself. So I have after completing my graduation in 2016, I joined Atra Infotech in Pune. Okay, so I was working on mainframe. So while I was working on mainframe, I got to know about the Cloud Edge and Khurram sir. So वहाँ पे मैंने classes join किए. So while working with Atra Infotech in Pune, so classes के साथ साथ मैं एक course किया. Course complete होने के बाद then I moved to Hadoop. In my next organization, I changed my technology. So then I work for DigiSurface, like a daily based organization. Then I work for Concentrix, and now currently I'm working for AWS. So I work as a cloud support engineer in the big data domain. Okay, so that's the brief for you. Okay, so those who are pinging, thanks for your responses, but until जब कोई इश्यू होगा तभी पिंग करना, otherwise it will be a distraction for me. Okay, sorry guys, I literally forgot, I got a mute. So कहाँ तक okay, I will start from the scratch again. I'm not sure. Okay, sorry. So I was discussing about the history of the Spark. Okay, so Spark को University of California में बनाया गया for testing of the Apache Mesos. Okay, so they wanted to test the Apache Mesos, so they created a new execution engine. So पहले वहाँ पर already MapReduce था. So they was not satisfied enough with the MapReduce results. So they created a new execution engine that they named as a Spark. Okay, so Apache Mesos की testing के लिए Spark बनाया गया. ठीक है. So it's kind of like secondary element, or we can say the secondary component. So it was not having that much significant at that time. So once the testing of the Apache Mesos is completed, what they have done is they have donated this Spark to the Apache Foundation. Okay, so once it is came into Apache, they made some changes. Okay, and they realized we can make some more changes and make it is most robust. Okay, so around after 2009, so the stable version of Spark is released around 2012. Okay, so first stable version which was released, it was Spark 0.6. Okay, 0.6. After उसके बाद बहुत सारे versions आए, like Spark 1 in 2014, then Spark 2 around 2016, and Spark 3 around 2020, and the latest is Spark 3.3. Okay, so this is the latest version. So मैंने जब last time ये presentation बनाया था, so it was Spark 3.3. So I guess the 3.3 is the latest version. उसके बाद शायद कोई release नहीं आया, so एक बार आप check कर लेना, you can confirm it. So whenever you are reading any new component in the big data environment, so we should make sure what is the latest version in the market. So क्या होता है कि हम बस एक पुराने वर्जन को बेस बना के हम पढ़ते रहते हैं, वी आर नॉट श्योर कि अभी लेटेस्ट इन द मार्केट में कौन सा है.
So maybe the structure remains same, but there are some major changes. So at least as a like admin, or what we can say, as a big data learner, we should know what is the latest version of each component which we are learning. Okay, so that's the purpose I just mentioned here, the what, like very first slide. Okay, and yeah. So in between, like in when the very first stable version was released in Spark 0.60, so the founder of the Spark, who like actually who created the Spark, they created their own organization. So you might heard the name is a Databricks. Okay, so उनका खुद का कंपनी उन्होंने बनाया Databricks on the top of Spark. So what is Databricks? Is like consider as an enterprise Spark. Okay, so if you need any like enterprise, like consider as we have the Cloudera and Hortonworks. Okay, so is a enterprise Hadoop. So same way, if you want an enterprise Spark, then there is an organization called Databricks. Okay, so it is nothing but is the founder of the Spark who created this Databricks organization. Let's move on. So if you have any doubts, like we'll discuss at the end. Okay. So very first we'll discuss the what like architecture of the Spark. Okay. So basically, like as we know that like every component is written in some basic language. जैसे कि Hadoop हमारा written है Java में. Okay. So same way Spark is written in Scala. Okay. So it's basic architecture, master slave architecture, जैसे कि हमारे others components है like HDFS, YARN. So same way it has a master slave architecture. In this master slave architecture, driver is the master, and there will be multiple executors which behaves as a slaves. Okay, so master slave architecture है. So उसके बाद Spark as a we'll see the complete overview. So let me go to next slide. So we'll get a better idea. Okay. सो ये स्पार्क फ्रेमवर्क है. ओके, तो स्पार्क में क्या होता है, सबसे पहले होता है कोर इंजन होता है, स्पार्क कोर. ओके, सो दिस इज अ स्पार्क कोर where you'll get the default what we can say the libraries. So when we will install the Spark, you can by default you can write the language like what we say, it supports the different languages by default like Scala, Python, R, Java. Okay, some of the basic tooling as well. So apart from that, like if you need anything else, you need to add some libraries like Spark SQL, machine learning libraries. Okay, streaming or graphics libraries. So if you need to add these libraries, but by default it will then just remember. And we can install the Spark in three different deployment modes. What we can say the Spark on Yarn, Spark on Mesos, and Spark standalone. Okay, and when we see the storage system, like Spark support multiple storage system. Okay, so they're not just really restricted to this all this local SDFS, RDBS, NoSQL. So these are the like just a highlighted storage system. Apart from that, it is support multiple. So if you see under the NoSQL, it supports the like what we say the Cassandra database. Uh, 1 second, a few of the things. Okay, thanks. I think my voice is breaking. Yeah, I will repeat and go slow once. Okay. So what I'm trying to say, स्पार्क कोर में ना कुछ बाय डिफॉल्ट कुछ लैंग्वेजेस सपोर्ट होती है. वो डिफॉल्ट लैंग्वेजेस कौन सी है, स्केला, पाइथन, आर, जावा. ठीक है, जब भी आप स्पार्क डाउनलोड करते हो, मतलब जैसे कि हम हडूप डाउनलोड करते हैं, हडूप जार जिप फाइल डाउनलोड करके हडूप इंस्टॉल करते हैं, same way if you install the Spark as well, so you will get some basic languages. Okay, so what are the basic languages that Apache Spark will be supported? It will be like Scala, Python, R, you can say. Okay, so once you install the Spark, you can write or you can start coding in the Python or Scala or basic language. Apart from that, आपको मान लीजिए Spark SQL या SQL करना है, या फिर मशीन लर्निंग करना है, या फिर और कोई और लाइब्रेरी चाहिए, so you need to like add this library as an add-on. So it will not come with the
what we say the core Apache Spark. Okay. ओके देन अपार्ट उसके बाद मैंने क्या बताया कि देर आर डिफरेंट डिप्लॉयमेंट मोड्स ओके डिप्लॉयमेंट मीन्स लाइक आप स्पार्क कैसे डिप्लॉय कर सकते हो सो विल डिस्कस दिस डिप्लॉयमेंट मोड इन द नेक्स्ट स्लाइड इन मोर डिटेल तो इन हियर यहाँ पर आप बस इतना समझ लीजिए कि देर आर थ्री डिप्लॉयमेंट मोड में से बेसिकली स्पार्क ऑन यान स्पार्क ऑन मेसोस स्पार्क स्टैंड अलोन ठीक है तो व्हाट आर दिस स्पार्क मेसोस एंड यान दिस लाइक व्हाट वी से द रिसोर्स मैनेजमेंट लेयर जैसे कि हमारे रिसोर्स लाइक वी हैव द सीपीयू मेमोरी सो ये जैसे हमारे क्लस्टर में मैनेज करने के लिए ये हमारे मैनेजमेंट लेयर्स होते हैं सो आप इसको स्पार्क ऑन यान भी रन कर सकते हो स्पार्क ऑन मेसॉस भी कर सकते हो ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट यू इवन विदाउट दिस यान एंड मेसॉस यू कैन यूज द स्पार्क स्टैंड अलोन बिकॉज स्पार्क के पास खुद का एक रिसोर्स मैनेजमेंट है दैट इट कॉल्ड एज अ स्पार्क शेड्यूलर ओके या एंड guys Asif if you just ping me if you have any question like there is any if your network issues or if I'm not audible only okay so if you just keep pinging me it will be a distraction for me okay okay so what I was telling that we are different yeah so first is like resource management layer में हमारे पास तीन component है yarn mesos and spark scheduler स्टोरेज में देर आर मल्टीपल ओके स्पार्क आप लोकल पे भी कर सकते हो लोकल इन द सेंस लाइक आपने आप एक लिनक्स मशीन लिया ठीक है वहां पर आपने स्पार्क डाला ठीक है तो वहां पर भी आप स्टोर कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो आप स्पार्क को इंटीग्रेट कर सकते हो एचडीएफएस के साथ उसके अलावा आप कर सकते हो स्पार्क S3 के साथ यानी आप विदाउट हडूप यू कैन यूज द स्पार्क एज वेल सो आई विल शो यू दिस लाइक in the AWS ना we have this one service Glue okay which is built on the top of Spark as well जैसे कि हमारे पास EMR है EMR is built on the top of Hadoop okay so same way so the in AWS we have the service Glue which is built on the top of Spark okay so if time permits then I will show you some features of the AWS Glue as well and you can add this service in your resume as well so इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ना लोकल यूज होता है ना एचडीएफएस यूज होता है यहाँ पर S3 यूज होता है बिकॉज S3 इज द वन ऑफ द स्टोरेज सिस्टम ऑफ द एडब्ल्यूएस ओके सो वहाँ पे जब वो स्पार्क यूज करते हैं दे इंटीग्रेट दिस दे यूज द स्टोरेज सिस्टम एज S3 ओके apart from this first three you can use different rdbms like mysql oracle and different NoSQL databases so these are the uh, rdbms or NoSQL are the out of scope as of now like for our this session basically we'll focus on hdfs and time permits with S3 as well I will show the Glue service as well okay yeah if we suppose multiple storage system okay we'll discuss all your queries at the end okay just be थोड़ा सा सबर कर लो ठीक है या ठीक है सो या लेट्स मूव ऑन so okay so these are the different deployment modes okay there are two different things एक deployment mode होता है और एक job submission mode होता है so often like candidate gets confused between the deployment mode and the job submission mode okay so deployment mode means like how आप Spark deploy कैसे कर रहे हो किस पर कर रहे हो what are the like what you say which resource manager you are using at the back end okay that's we call as a deployment mode okay and there is another term is a job submission mode there are two job submission mode is the client mode and the cluster mode okay so that's the job submission mode so ये difference थोड़ा सा आप you should note it down whether the interviewer asking about the deployment mode or the job submission mode okay so in deployment mode we can as I said we can deploy the Spark on EC2 standalone mode Mesos on Yarn and apart from there are few latest in the market that is Kubernetes as well okay so basically these are the like resource management layer how you wanted to like manage the resources or you can say how you wanted to allocate the resources to the your Spark application or we can say the like number of executors okay all these things how you wanted to manage few things again yeah Girish will discuss your queries at the end okay
Yeah, Sachin asking to repeat the architecture. Okay, Sachin will repeat the architecture once again. Okay. Oh, maybe we can discuss this architecture in the next slide. Okay, while I'll explain the next slide. I'll discuss this architecture again. Okay, so before I missed one point. Okay, so I just missed to define this what is the actual Spark. Okay, so I will go back to definition of the Spark. So Spark is nothing but is like what we say it is a what we say is a processing engine. Okay, so what is the processing? Like you might most of you must be understand what is the processing. Like, but to like give a better idea, I will explain it with the help of Excel sheet. तो थोड़ा सा मैं वेरी बहुत बेसिक में समझाना चाहता हूँ कि व्हाट इज एग्जैक्टली द प्रोसेसिंग जो मतलब दोज आर फ्रॉम नॉन आईटी बैकग्राउंड दे कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल ओके so is my screen visible this new excel sheet okay so तो प्रोसेसिंग क्या होता है वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं ओके ठीक है क्योंकि स्पार्क इज अ प्रोसेसिंग इंजन ओके सो मान लीजिए फ्लिपकार्ट का कोई बिलियन डे सेल था ठीक है सो उसके पास एक डेटाबेस है और उसमें एक टेबल है उस टेबल में डेटा क्या है मान लीजिए कि यूजर आईडी ठीक है देन इट्स यूजर नेम so ऐसे consider there are multiple columns in a table so यहाँ पर मैंने सिर्फ around 6-7 columns add किए there may be like 100 columns about one particular order like मैंने एक order दिया तो मेरी बहुत सारी details होती है कि मेरा नाम क्या है order date क्या है क्या transaction है how I made the payment whether I use the credit card or debit card okay ऐसी बहुत सारी details एक डेटाबेस में और टेबल में हो सकती है ओके grouping. Okay, so consider there are like there are 100 columns and the rows will be like billions, not like hundreds and thousands. There will be like billions of the rows. Okay, so out of these billions of rows and hundreds of columns, now what the management of the Flipkart wants, they wanted to know कि किस सिटी से सबसे ज्यादा ऑर्डर आया पर्टिकुलर इन अ पर्टिकुलर बिलियंस डे सेल कहाँ से सबसे ज्यादा ऑर्डर whether from पुणे मुंबई कोलकाता okay so what they will do they will reach out to their IT team okay so from what they will tell to their IT team also from हमारे पास ये डेटाबेस है ये टेबल है ठीक है इस डेटाबेस से हम आपको इतने सारे रोज है मतलब देर consider there are 1 lakh rows okay so in one out of this 1 lakh rows you just give us the data जहाँ पर सबसे ज्यादा सेल्स हुआ है और जहाँ से सबसे ज्यादा व्हाट वी कैन से द ऑर्डर्स आए हैं ठीक है तो अब 1 लाख रो से मैन्युअली ऐसे चेक करना इट्स नॉट लाइक व्हाट वी से feasible or not easy task okay so what they will do their IT team or like they will write some codes okay like consider in simple if you know the uh, SQL language okay so what they will do is my this notepad is visible guys okay, thanks for confirmation. Okay, so what like if the developer is from the SQL background, okay, what he will do, he will write a SQL like select, okay, star from कोई database है मान लीजिए हमारा ये फ्लिपकार्ट database है टेबल नेम है ऑर्डर डिटेल्स ठीक है यहाँ select ऐसे ये वाला सिक्वल लिखेगा अब इसको यहाँ पे वो क्या करेगा कंडीशन लगाएगा उसको कंडीशन क्या है तो कहाँ से सबसे ज्यादा ऑर्डर आए ठीक है सो व्हाट ही विल राइट इज लाइक मैक्स नॉट मैक्स ओके ठीक है अच्छा मान लीजिए वेर सिटी इक्वल टू पुणे ठीक है ठीक है तो इस टाइप का डेवलपर क्या करेगा कोड लिखता है जिसमें क्या है अब ये कोड क्या करता है जहां पर ये इस डेटाबेस से फ्लिपकार्ट डॉट ऑर्डर डिटेल्स इस डेटाबेस में
इस टेबल में, ऑर्डर डिटेल्स वाले टेबल में, जहां पर सिटी इक्वल टू पुणे, जहां पर मतलब मान लीजिए ये बहुत सारे सिटीज है हमारे पास, पुणे, मुंबई, कोलकाता, ठीक है। सो मान लीजिए सर देर आर लाइक दैट, देर आर मल्टीपल सिटीज, ओके। तो जहां जहां पर पुणे है, तो वो क्या करेगा, ये क्यूरी क्या करेगी, सर्च करेगी और रिजल्ट डिस्प्ले करेगी। अब इस बेसिस पे he can like that the developer can make like write complex queries as well. So queries इतने सिंपल नहीं होती है, ठीक है, इट विल बी मोर कॉम्प्लेक्स। अब इसमें मल्टीपल कंडीशंस ऐड करते हैं डेवलपर, मान लीजिए सिटी पुणे हो, ठीक है, एंड कंडीशन क्या होना चाहिए, एंड ट्रांजेक्शन डेट समझो, एक और एक कॉलम है हमारे पास डेट वाला, ठीक है, डेट इक्वल टू 2022 0204, ओके। तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स कोडिंग लिखते हैं, जहाँ पे एज पर द लाइक रिक्वायरमेंट ऑफ द मैनेजमेंट दे विल राइट द कोड एंड फ्रॉम द list of data they what we say, they pull out the information, or we can say the insightful data, so what were helpful for the decision making for the management, okay. So few things you guys, ओके। सो ये होता है, एक्चुअली ये होता है प्रोसेसिंग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, कि प्रोसेसिंग में क्या होता है कि बहुत सारा रिकॉर्ड होता है, तो उससे हम क्या करते हैं, कुछ मीनिंगफुल डेटा ड्राइव करते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट के लिए। सो इन ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा, सो मैनेजमेंट कैन लाइक फोरकास्ट पर्टिकुलर सिटीज से हमारे ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है, so then they can, what they can do is they can increase their sales in particular storage system in the particular city। मान लीजिए पुणे से सबसे ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, so what they will do in the next time, they will increase their storage system nearby Pune only, so that the transaction what we say, the routing on the transport will be very less, okay। So like that, depends on the data they make the what is the decision making, so like that this is the processing, okay। So apart from this just the processing, what is the Spark is, a Spark is a real time processing, okay। So real time processing engine, why we call it is a real time processing engine, the reason is it's used the in memory processing। So there are two terms, it's a real time processing or in memory processing। so हमारे पास जो पुराना एग्जीक्यूशन इंजन था जैसे कि मैप रिड्यूस, ओके, सो इट्स नॉट इन मेमोरी प्रोसेसिंग, ये क्या करता है, ये it use the like what is say the storage system, like how I can give example. Consider like we need to do a complex calculation, 25 into 20 into 30, okay, and 30 into 45, like that, this complex uh, calculation we need to do, or we can say this like we need to do some board math, like there are some addition, like 20 plus 30 minus 27, like that, this is a complex calculation we need to do. So basically what we'll do as a human being, we'll take a rough pen or paper, okay, so we'll do this calculation, okay। So this rough pen or paper, we can say, or storage system we'll use for this calculation is nothing but is a map reduce, okay। So map reduce क्या करता था कि backend में वो rough sheet पर what we can say is use the uh, storage to do this all this processing। One second guys, a few things again। ठीक है, so all this processing it used to do, okay। so MapReduce processing क्या करता था, but what Spark 2 is, like consider like I'm very, like my memory is very sharp, okay, I'm doing all this calculation without using any pen or paper, I'm doing this all calculation in my mind itself, okay। 25 into 20 into 30 into 45 plus 20 plus 30, like all this calculation I will do, I'm doing in my mind only। so आप देख लीजिए जो मतलब if I'm doing this all this calculation without the pen and paper, the processing will be fast, right? So this processing or this calculation is nothing but like we said the in memory processing. We are not using any like a disk or temporary storage to like do this calculation, okay। So as compared to using this doing calculation using the pen or paper, we can say the some storage system doing the calculation in the memory will be faster, right? So same way the Spark uses the memory instead of disk.
So that's the reason Spark is like memory intensive as well as the fast, because it perform all the task operation in memory itself. Okay. Yeah, Amit will discuss this Spark streaming at the end. Okay. Okay. So that's the example of in-memory processing. Okay. Okay. So hope I like this example help you to understand what is the in-memory processing. Okay. So basically आप ऐसे समझ लेते हैं कि मेमोरी यूज होता है, हमारे पास दो, हमारे पास व्हाट वी से resources है, disk and memory. Okay. So but Spark uses the memory for its processing, and whereas the MapReduce is used to use what we say the disk. Okay. So that's why the processing of the Spark is faster as compared to MapReduce. Okay. ठीक है. So let's move to this our main presentation. ठीक है. So yeah. So आर्किटेक्चर में क्या होता है? तो जैसे मैंने बताया कि ये मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर है. ठीक है. तो मास्टर में होते हैं हमारे पास ड्राइवर, एंड स्लेव में होते हैं हमारे पास एग्जीक्यूटर. ठीक है. सो वी आर डिस्कसिंग दिस Spark on yarn because most of the organization uses the Spark with the Hadoop on yarn only. Okay. So that's the so कि हम Spark on, ठीक है. तो आप यहाँ पर देखोगे हमारे पास ये जो रिसोर्स मैनेजमेंट लेयर है, यहाँ पर हमारे बहुत सारे कंपोनेंट है, Hadoop, Yarn, Apache Mesos, ओके, Kubernetes, Spark Standalone. ठीक है. सो इन केस ऑफ द Yarn में क्या होता है कि अगर इफ यू रिमेम्बर द आर्किटेक्चर ऑफ द Yarn, ओके, तो Yarn में एक एप्लीकेशन मास्टर होता है. ठीक है. और मल्टीपल नोड मैनेजर्स होते हैं. ठीक है. और व्हाट वी कैन से द रिसोर्स मैनेजर होता है, मल्टीपल नोड मैनेजर्स होते हैं. ठीक है. सो सबसे पहले अगर इफ यू रिमेम्बर, सो जब हम when the client submit the application to the Yarn, okay, so first of all container zero will be launched. Okay. Inside that container zero, Yarn application master will be launched, right? So Yarn application master what will do, it will negotiate the resources with the resource manager. Okay. Then all the resources will be allocated to Yarn application. Then container one, container, all the required container will be launched on different node manager, और उस नोड मैनेजर पे हमारे टास्क रन होते हैं. दिस इज द लाइक फ्लो ऑफ आवर Yarn application. ओके. सो दिस इज द फ्लो ऑफ आवर Yarn application. सो अब इसमें क्या होता है, जब Yarn और Spark एक साथ काम करते हैं, तो हमारा जहाँ पे Yarn application master लॉन्च होता है, वहीं पर Spark का ड्राइवर लॉन्च होता है. ठीक है. So you can compare Spark driver as a Yarn application master. Okay. जैसे कि Yarn में क्या होता है कि सारा कंट्रोल Yarn application master के हाथ में होता है, इसी तरह सारा कंट्रोल यहाँ पर Spark driver के हाथ में होता है. So Spark driver like negotiate the resources. Okay. All the, like driving the application. If the what is the Spark job failed, it will reinitiate. All these things will be taken care by the Spark driver only. Okay. So in the Spark driver, there is one important component, that is a Spark context. Okay. So Spark context will discuss in the like next slide. ठीक है. सो यहाँ पर Yarn एप्लीकेशन मास्टर में हमारा ड्राइवर लॉन्च हो गया. ठीक है. इसके बाद क्या होता है, अगर जब हम वी आर वर्किंग विद द Yarn, तो जहाँ पे हमारे नोड मैनेजर्स होते हैं, वहां पर हमारा क्या लॉन्च होता है, कंटेनर लॉन्च होता है. ओके. तो इन दैट कंटेनर वी विल हैव आवर एग्जीक्यूटर. ओके. तो स्पार्क में एग्जीक्यूटर्स होते हैं. ठीक है. तो इन दैट एग्जीक्यूटर्स वी हैव मल्टीपल टास्क. तो सिमिलर आप ऐसे कंपेयर कर लो कि आपका एप्लीकेशन मास्टर इक्वल टू योर स्पार्क ड्राइवर. ओके. और आपका नोड मैनेजर कंटेनर इक्वल टू एग्जीक्यूटर. ठीक है. तो यहाँ पर कंटेनर में हमारे एग्जीक्यूटर लॉन्च होते हैं. देन इन दैट एग्जीक्यूटर वी एग्जीक्यूट दिस अवर टास्क. ठीक है. Yeah, Ulhas will discuss the client mode and the cluster mode at the end. Okay, it's in the slide. Okay, it's in next slide. Okay, so this is the basic flow. ठीक है. अब हम आगे जाते हैं. ठीक है. So Ulhas, as like there are, as I said, basically those job submission mode. Next to cluster mode, next one is a client mode. Okay, so what is the difference? Like how like if client is submitting the job, that's the we say the job submission mode. Okay.
So if you look at the very first, this is yarn client mode, इधर इधर राइट साइड वाला, ओके। यहाँ पर क्लाइंट मोड में क्या होता है कि one basic difference you can remember is the where your driver is launched, that's the difference, okay। सो जहाँ पर ड्राइवर लॉन्च होता है उस बेसिस पे वी कैन डिफरेंशिएट वेदर इट्स अ क्लाइंट मोड और इट्स अ क्लस्टर मोड, ओके। तो क्लाइंट मोड में क्या होता है कि जहाँ पर क्लाइंट मशीन होता है वहीं पर ड्राइवर लॉन्च होता है, ठीक है। जहाँ से मान लीजिए आई एम कनेक्टेड टू एन एज नोड, ओके, इन अ क्लस्टर, ओके, फ्रॉम दैट एज नोड आई एम सबमिटिंग अ यार्न एप्लीकेशन, ओके, इन अ क्लाइंट मोड। सो उसी एज नोड पे हम मेरा ड्राइवर लॉन्च होगा, ओके। And from that, after once the driver is launched on that particular edge node, वहां से फिर उसके बाद then what we say the container and the executor will be launched on the cluster, ठीक है। if you look at the cluster mode में क्या होता है कि driver is not fixed where it will be launched, or we can say it will not launch on the machine where from where the client is submitting the job, okay। यहाँ पर आप देखोगे ड्राइवर यहाँ पर नहीं है, जहाँ मान लीजिए ये क्लाइंट इज नथिंग बट इज एज एज नोड इन आवर हडूप इन्वायरमेंट, ओके। सो यहाँ पर ये होता है कि आप एक एज नोड पे कनेक्ट किए तो वहीं पे आपका ड्राइवर लॉन्च होगा, बट इन दिस क्लस्टर मोड में वैसा नहीं होता है। ड्राइवर कैन बी लॉन्च एनीवेयर और वी कैन से ऑन एनी मशीन इन द क्लस्टर, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये हमारे बहुत सारे नोड है राइट साइड के, ठीक है। सो वन ऑफ द नोड मैनेजर दैट ड्राइवर इज लॉन्च इन द क्लस्टर मोड, ठीक है। सो दिस इज द ड्राइवर here, but here in the client mode the driver is launched on the client machine itself, so it's a very basic difference। so if someone asks or interviewer asks you what is the difference between the cluster mode and the client mode, तो आप basically यही बोलना client mode में ये होता है कि Spark driver will launch on the client machine itself, okay। but in the cluster mode driver will can be launched anywhere in the cluster, or you can say any node in the cluster, okay। ठीक है, yeah, we'll discuss the advantage। तो अब ज्यादातर प्रोडक्शन में जो होता है क्लस्टर मोड में ही यूज होता है, बिकॉज देर आर सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बोथ द मोड्स, ओके। तो ड्राइवर मोड कहाँ पे सुटेबल होता है, टेस्टिंग पर्पस, ओके। आप कुछ टेस्ट कर रहे हो आपके मशीन पर या फिर डेव और टेस्ट इन्वायरमेंट में या स्टेजिंग इन्वायरमेंट में, इन दैट केस में क्लाइंट मोड is like feasible or it's useful, but in the production environment that is not feasible। अब क्या होता है कि मान लीजिए मैंने एक जॉब सबमिट किया ड्राइवर क्लाइंट मोड में, ठीक है। और मैंने ये मेरा जो क्लाइंट मशीन है जहाँ पर मेरा ड्राइवर लॉन्च होता है और लॉन्च होगा, ठीक है, और वो मशीन टर्मिनेट होगा या फिर मैंने उसको बंद कर दिया, तो ड्राइवर यहाँ पर क्या होगा, किल हो जाएगा, ठीक है। तो ड्राइवर इफ द ड्राइवर गेट्स किल्ड the all the application of what we sell the your Spark job will be failed। That's the reason it's not recommended to use the client mode in the production environment, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपने क्लाइंट मशीन से या किसी भी मशीन से आपने आपका जॉब सबमिट किया क्लस्टर मोड में, तो और ड्राइवर कहीं भी लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर यू आर क्लोजिंग योर और टर्मिनेटिंग योर क्लाइंट मशीन, it will not impact on your Spark application because driver is not bonded with your client machine। So that's the like difference between this both the use case। कि प्रोडक्शन में ज्यादातर हम क्लाइंट क्लस्टर मोड ही यूज करते हैं, क्लाइंट मोड यूज नहीं करते हैं। क्लाइंट मोड इज प्रिफर्ड फॉर टेस्टिंग ओनली, ठीक है। and yeah, one more benefit we can say like in particular to driver, but client mode में क्या होता है कि यहाँ पे आप मान लीजिए आप टेस्ट इन्वायरमेंट में हो, ठीक है। आपको ड्राइवर मेमोरी या फिर ड्राइवर फोर्स बहुत चाहिए एज यहाँ पे क्लस्टर में क्या होता है कि आपको रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड द लाइक पर्टिकुलर लिमिट और सेट। so consider like there's a limit, we'll discuss this like how this driver memory and executor memory is controlled in the yarn environment। for now for just for understanding purpose क्या होता है कि आपके इन्वायरमेंट में आपको रिस्ट्रिक्शन होते हैं, क्या यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट ऑफ मेमोरी और मेमोरी एंड व्हाट इज द सीपीयू फॉर द ड्राइवर और एग्जीक्यूटर, ठीक है। अब एक यूज केस ले लीजिए, आपको ड्राइवर मेमोरी आपको बियॉन्ड दिस लिमिट चाहिए। मान लीजिए कि 4 GB इज द लिमिट फॉर योर मेमोरी टू सेट इन योर इन्वायरमेंट फॉर द ड्राइवर, ओके। बट आपको 4 GB से ज्यादा चाहिए, आपको चाहिए 8 GB, ठीक है।
तो आप क्लाइंट मशीन क्लाइंट इन्वायरमेंट में व्हाट यू कैन से इन द क्लाइंट मोड आप उसको ज्यादा सेट कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो ड्राइवर है आपके क्लाइंट मशीन पे लॉन्च हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि क्लस्टर में लॉन्च नहीं हो रहा है, तो उस वजह से आप क्या कर सकते हो, तो अगर आपको ज्यादा मेमोरी चाहिए ड्राइवर के लिए, तो इन दैट केस यू कैन यूज द यान क्लाइंट मोड फॉर टेस्टिंग पर्पज ओनली, ओके, because it's not going to launch in the like cluster, and you don't and uh, what is the environment level, or you can say cluster level restriction will not be applied on the driver in this case, okay. So in that case or scenarios only we'll use this client mode, okay. And but the rest of the use case we use this what is a cluster mode. Few questions again, okay. Okay, so Rohit is asking, so the master and open letters place. Yeah, Rohit will discuss your queries at the end, okay. Just don't break the flow as of now. Okay, so see, that's the difference between the cluster mode and the client mode. Okay, let's move on to next slide. Okay, we'll discuss about the APIs. APIs is ये वाला जो part है ना, it's more related to development. ठीक है, so API is nothing but is like how like Spark will communicate with the data. So हमको Spark के through we need to like process some data, right? That's the main purpose of our Spark. So for the processing, Spark need to like communicate with your data. So there are different APIs, or we can say the like mechanism, or we can say the ways how the Spark will communicate with your data. Okay. Yes, Siraj, Bhagwan, Imran will discuss your queries. Please will discuss your queries at the end. Okay. I, yeah. Yeah, yeah. So what I was discussing, yeah, there are different ways how Spark communicate with your data. RDD, data frame, or data set. ठीक है, these are the like very basic things. Apart from that, आप अगर AWS Glue में जाते हो ना, so उन्होंने खुद का एक API बनाया that they call it a dynamic frame. Okay, so it's combination of data frame and data set. So they call it a dynamic frame. Okay, so जब मैं at the end when we go through the AWS Glue, I will show what is the dynamic frame, how it's work as well. So as of now, focus on this Apache Spark. So इसमें क्या होता है कि very first like when Spark was launched, so initially there was RDD only. So RDD is nothing but a resilient distributed data set. Okay, that's the full form of RDD. So you can get more details on about this RDD on the like on the Google as well. So RDD is nothing but like how you are dealing with your data, or you can say how you are like reading your data, or you can say the data set. Okay, so first in 2011 RDD था, उसके बाद they have launched data frame, and then they launched a data set. Okay, so mostly in the market nowadays they are using the data frame only. Okay, so this RDD data frame data set is some advantages disadvantages. So as the admin point of view, we don't have to go much in deep, but we should know like what at least basic things, what are the terminology used related to this APIs. Okay, yeah. Rushikesh is asking why RDD is immutable. Yeah, sure, Rushikesh, I will answer that. So yeah, so what is like RDD will discuss in them. So basically क्या होता है अभी जहाँ पे अभी आप Spark पढ़ोगे ना, so mostly people for teach you or will tell you about the RDD only. They'll not discuss about the data frame or data set. Okay, even like हमको अगर नहीं भी पढ़ना है, so we should at least know there is something like data frame or data set as well. Okay, so RDD से ही बाकी सब concept बने. So but we should know this all the other APIs as well. So I will explain you what is exactly the RDD. Okay. So maybe with the help of next slide, you will better understand how RDD exactly works, and or what is the RDD. Yeah. So RDD is अब मान लीजिए as I said RDD is nothing but like what do we say
how we are reading or is the way to read the data. Okay, अब मान लीजिए we are if we are dealing with the SDFS storage system. Okay, in SDFS storage system में क्या होता है कि हमारे पास blocks होते हैं, ठीक है, block 1 block 2, ठीक है, अप टू डिफरेंट डिफरेंट डेटा नोड पे हमारे डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक होते हैं, ठीक है। अब आप जैसे वी इनिशियली डिस्कस है कि स्पार्क इन मेमोरी प्रोसेसिंग है, वो क्या करता है, सारा डेटा मेमोरी में प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। तो बिफोर लाइक प्रोसेसिंग द डेटा व्हाट इट विल डू, it move the data from the storage layer or we can say disk to RAM, ठीक है। तो क्या मेमोरी यूज करता है ना, तो हमारा जो HDFS डेटा है वो कहाँ पर होता है, वो डिस्क पे होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, बिफोर प्रोसेसिंग इट विल मूव डेटा फ्रॉम डिस्क टू RAM और वी कैन से द मेमोरी। ओके, सो अब हमारे HDFS in terms of SDFS, we have the blocking system. Okay, to divide the data in terms of block of size 128 MB or 256 MB. Okay, so मान लीजिए आपका एक block है, it will move to your move to your memory or RAM. Okay, so block one है, it will refer as a partition one. Okay, block two है, it will refer to a partition two. Like that, there will be partitions. Okay, so in terms of like SDFS, हम डेटा को क्या बोलते हैं, chunks of data we call as a block. Okay, in terms of Spark it called as a partition, ठीक है। so this is just a naming difference है, ये थोड़ा सा याद रखना कि Spark में partitioning बोलता है, जो डेटा को जो चंक करते हैं वो डिवाइड करते हैं, तो Spark called it as a partition, ठीक है। Okay, so when data loaded from HDFS to RAM, it is called as partition. Okay, so this collection of this partition one, partition three, or complete collection of partition, it is called as nothing but is it called as a RDD. Okay, a few things, guys. Okay, ठीक है। uh, yeah, hope we have to create RDD. I will explain. Okay, I'm going to explain. ठीक है, so ये RDD होता है, ठीक है। next slide में I will explain you in a better way. Okay, so जैसे मैंने बताया था कि RDD क्या होता है, इट्स collection of partition. Okay, so partition, what is partition, is nothing but a like chunk of data which is loaded from your HDFS or we can say from disk to memory. Okay, आपने क्या किया, डिस्क से आपने डेटा मूव किया रैम पर, मल्टीपल पार्टीशंस की, और सारे पार्टीशंस लाइक पार्टीशन वन और अप टू 100 और अप टू n नंबर्स ऑफ पार्टीशन, तो सारे पार्टीशन का कॉम्बिनेशन आप क्या बोलोगे, इसे RDD बोलोगे, ठीक है। दिस RDD। अब इस पे क्या होता है, वंस डेटा इज लोडेड इन योर मेमोरी और रैम पर डेटा आ गया, उसका उस पर फिर प्रोसेसिंग होता है। तो RDD पे देयर आर टू एक्शंस, like what you say, the actions and transformation. There are two approaches what we perform on the RDD, actions or transformation. Okay, so actions and transformation is like it's more related to like development, ठीक है। जो RDD क्रिएट करना, RDD पे एक्शन परफॉर्म करना, ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करना, ऑल दिस लाइक वर्क इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट, ठीक है। ये हमको ज्यादा वी डोंट नीड टू गो डीप डाइव इनटू दैट, बट एज अ एडमिन we should know this terminologies like what are this partition, what is RDD, what is action, okay, what is the transformation, all these basic uh, uh, terms we should aware of. Okay, okay, um, okay, hope it's clear up to here, ठीक है। I'll go back to slides and we'll यहाँ, ठीक है। तो RDD क्रिएट करने के जैसे RDD क्रिएट होता है ना, कि आपने क्या किया कि RDD किया, सेम वे में फिर आप डेटा फ्रेम भी क्रिएट करते हो, डेटा सेट भी क्रिएट करते हो। तो सारे इसमें ऐसा ही होता है कि क्या होता है कि बस हाउ यू क्रिएट, लाइक देयर आर if I have the code sample, I will show you in the tomorrow in the practical session. ये कोड होता है कि आप कैसे रीड कर रहे हो, मतलब मान लीजिए आप क्या करते हो, आप एक टेबल रीड कर रहे हो, तो आप क्या बोलते हो कि spark dot context, okay, ऐसे कोड लिखते हो, and then you will give the table name, so it will read that table and move the data from the HDFS to RAM. Okay, और अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक कंसीडर हमारे पास HDFS नहीं है। अब इन केस ऑफ HDFS ये ब्लॉकिंग सिस्टम है, हमारे पास ब्लॉक होते हैं, बट वी हैव सम स्टोरेज सिस्टम, देयर इज नो ब्लॉक सिस्टम। लाइक कंसीडर जहाँ पे एक टेक द एग्जांपल ऑफ नो सिक्योर डेटाबेस कैसेंड्रा, कैसेंड्रा में ब्लॉक्स नहीं होते हैं। ओके, तो वहां पर भी क्या होता है, स्पार्क का खुद का एक लाइक पार्टीशनिंग मैकेनिज्म होता है। इवन योर डेटा इज नॉट डिवाइडेड इन टर्म्स ऑफ चंक और वी कैन से इन द पार्ट, it will divide the data before loading to what we say the RAM. Okay,
आपका डेटा डिवाइड भी नहीं है, लाइक इन टर्म्स ऑफ S3 एज वेल डेटा डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो S3 से डेटा रीड करता है स्पार्क, फिर वो अपने मेमोरी में लेकर आता है, ओके, एंड देन इट डू दिस पार्टीशन, ओके। तो आप मान लीजिए आपका 1 GB डेटा है, ओके, so it will load the data in its memory and do the partitioning, okay. So what we can say is Spark has its own mechanism to like chunk the data for its processing, okay. Even you are dealing with like NoSQL, RDBMS, or you can say the non-blocking system storage system. ठीक है. Now let's move to that's the part of the RDD. Okay, so I'm not covering much about this RDD data frame dataset because it's more related to development. ठीक है, तो data frame कहाँ पर use होता है, data set कहाँ पर use होता है, जब we are dealing with like if you are dealing with a SQL, you need to use the data frame. Okay, if you are using with different language, you need to use the data set. These are the advantages and disadvantages. So you can go through all these things related to this RDD and data frame. Okay, on the Google. So our main focus will be related to performance tuning of this Spark job, okay, executor and architecture point of view. All this will be our main focus. Okay. Now I will explain this you like application flow. Okay. So there's a term is like we DAG. DAG is nothing but direct acyclic graph. Okay. So in a like if it is just a way to fancy way to say that how your application flow work in the Spark, or you can say as Spark application flow how it works. Okay, so Spark में ठीक है multiple, there will be multiple stages, and in that multiple stages multiple tasks. ठीक है, so stages and tasks we can see on the what we say Spark history server. Okay, so tomorrow when we will submit a demo Spark application, I can show you how like jobs are created inside that job. Stages will be created and inside that task will be created. Okay, so depends how your complex job is. There will be more or less number of jobs, stages and tasks. Okay. Yep. I think my voice was breaking. Okay, I will repeat once again. Okay, what I discussed few minutes back. I just explained the like Spark up like what is application flow, or we can say it's called as a DAG, or DAG nothing but like how your application flow will be executed, or we can say the how the plan, what is the plan of your Spark application. So DAG is nothing but direct acyclic graph. Okay, so क्या होता है स्पार्क जब एप्लीकेशन सबमिट होता है तो उसको डिवाइड किया जाता है जॉब्स में. इनसाइड जॉब्स देयर विल बी मोर और लेस स्टेजेस, और स्टेजेस के अंदर बहुत सारे टास्क होते हैं. ठीक है, तो एक्चुअल जो टास्क होता है वो एट द एंड रन होता है जहां पर हमारे दिस टास्क विल बी एग्जीक्यूटेड इनसाइड अ कंटेनर ऑन अ एग्जीक्यूटर. ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है दैट दिस जॉब स्टेज एंड टास्क वाला हम प्रैक्टिकली कल देखेंगे जब हम एक स्पार्क डेमो एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करेंगे. ठीक है, ठीक है, एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. ठीक है, there are some other important concepts in the Spark. Okay, before that let me check what is the next slide. ठीक है, ठीक है. This is the last slide for today's session. Okay, so this is a theory part that will wrap it up soon. Okay, so important concept because Spark may apart from that we have the Spark speculative execution. So what is the speculative execution? You might aware कि क्या होता है कि मान लीजिए कोई आपका पर्टिकुलर टास्क स्लो रन हो रहा है. ठीक है, so what Spark driver will do, it will identify this particular task is running slow on the. Okay, so it will what you say, it will launch a duplicate task, same task is और node पे launch करेगा. Okay, or not a same host, it will launch this same task on different host, or you can say on a machine, and जो भी सबसे पहले execute complete हो जाता है उसका result लेता है, and the other task will be killed. So that's we call it a speculative execution. ठीक है, उसके अलावा बहुत there is a cost based optimizer
So it is a what we say, it's related to Spark SQL. किसमें क्या होता है कि before like creating a tag, it will create the multiple execution plans कि दो चार execution plans बनाता है. So whatever the best execution plan will be there, it will be choose that execution plan for the execution of your Spark application. So this is called as CBO. So okay, and apart from that, we have this persisting and caching. Okay, so persisting and caching is nothing but is like how if you what you say, storing your RDDs, or we can say the storing your data set or data frame. Like as the name like indicate, persist means like for constant. Like okay, so like आप मान लीजिए आपने एक आरडीडी बनाया, ठीक है. सो जैसे कि बिफोर लाइक एक्चुअल प्रोसेसिंग ऑफ योर स्पार्क एप्लीकेशन, यू नीड टू क्रिएट एन आरडीडी. ओके, सो आरडीडी को आप यू कैन स्टोर फॉर परमानेंटली. लाइक मान लीजिए आपको सेम डेटा अगेन एंड अगेन प्रोसेस करना है. ओके, तो आप क्या कर सकते हो, वो आरडीडी आप अपने डिस्क पर सेव कर सकते हो. और वी कैन से द स्टोरेज लेयर वट एवर यू कैन मेंशन द स्टोरेज लेयर एज S3 और HDFS. ओके, जो जो स्टोरेज लेयर आप मेंशन करते हो वहां पर आप अपना आरडीडी स्टोर कर सकते हो. सो दैट वी कॉल इज अ persisting. ओके, and there is a caching, like temporary if you are storing. So if you don't require to use that RDD again, then we that's called as a caching. Okay, that's a two terminology related to RDD, persisting and caching. Then another is a checkpointing. So checkpointing is comes related to most of the times streaming job. कि कहाँ तक डेटा आपको प्रोसेस किया. मान लीजिए आप एक स्पार्क स्ट्रीमिंग और स्पार्क रियल टाइम स्ट्रीमिंग जॉब प्रोसेस कर रहे हो, तो इसमें एक चेक पॉइंटिंग होता है कि यू कैन रेफर द चेक पॉइंटिंग एज लाइक वी यूज्ड टू प्ले द गेम्स कि यहाँ तक रीच हो गया, यहाँ तक लाइक यू कैन से दिस काइंड ऑफ बुक मार्क. ओके, कि आपने डेटा यहाँ तक पर्टिकुलर प्रोसेस कर लिया. कि मान लीजिए आपका ड्यूरिंग द स्पार्क प्रोसेसिंग योर जॉब गेट फेल्ड. ओके, so it will not what you say, restart the application from the scratch. It will check the last checkpointing, कहाँ तक checkpointing हुआ था. So from that checkpointing it will resume. So checkpointing will help to like avoid the reprocessing the complete data. Okay, apart from that we have the shuffling mechanism. So shuffling में क्या होता है, डेटा मूव होता है कि लाइक मान लीजिए we can explain. As we have the Spark in we have partitioning in the Spark. Okay, तो shuffling में क्या होता है कि डेटा एक नोड से दूसरे नोड पे मूव होता है. ठीक है, so that's why called is we call it shuffling is a costly operation, and in any Spark application your shuffling should be minimum. जितना कम होगा ना उतना अच्छा होगा, क्योंकि क्या होता है कि जितना आपका shuffling ज्यादा होगा आपका डेटा मूव होगा. लाइक डेटा विल बी शफल्ड फ्रॉम वन नोड टू अनदर. तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब डेटा मूव होता है तो इट विल रिक्वायर योर सीपीयू एंड द नेटवर्क. तो सीपीयू और नेटवर्क जहाँ पे ज्यादा लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉटलनेक सिचुएशन क्रिएट होती है. तो जब भी हम लाइक कोड रिव्यू करते हैं किसी डेवलपर का, या फिर हम सबसे पहले पूछते हैं कि शफलिंग हो रहा है क्या, इसमें शफलिंग मैकेनिज्म है क्या. और वी कैन व्हाट वी से we'll try to reduce the shuffling. We suggest that like developers do the minimum shuffling, because shuffling से basically वही होता है कि आपके रिसोर्सेज ज्यादा लगते हैं. तो रिसोर्सेज ज्यादा लगेंगे तो बट ऑब्वियस आपका जॉब स्लो हो जाएगा. सो दैट्स द कॉल्ड इज शफलिंग. शफलिंग किस वजह से होता है, देयर आर सम व्हाट यू से द actions which, because that action shuffling will be more like आप repartition कर रहे हो कि आपने एक बार partition कर लिया, ठीक है, अब फिर से repartition करोगे आप. number of partitioning what is it, if increasing the partition or decreasing the partition, उसमें क्या होता है कि डेटा मूव होता है एक नोड से दूसरे नोड पर. ओके, तो इन दैट केस एज वेल आपकी शफलिंग ज्यादा होती है. सो दिस आर द फ्यू like actions which we should as a developer, like as a admin we should suggest to developers. Okay, तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स फाइंड आउट किए थे, जैसे कि रिड्यूस बाय की, ग्रुप बाय की, जॉइन. ओके, दिस आर द लाइक ऑपरेशन which because of which the shuffling happens. Okay, so yeah, and yeah, this all this operation is related to development. Okay, so I have also not used this reduce by key, group by key. Okay, so I just seen that, but I am not sure how like how practically we can use this, but I like just found out and noted down here. Okay, and I can see there are multiple things in the chat. Okay, we'll cover. Okay, so this part is about the theory. All this up to this we had the theory part. Okay, so tomorrow we'll cover the
practical part. Okay, so whatever we have like gone through all these things, we'll cover tomorrow. Okay, so what we'll see tomorrow is like हम Spark installation देखेंगे हम क्या करेंगे. We'll add a Spark as a service on our one of the CDP clusters. Okay, then after that we'll submit our Spark demo job, and then we'll see the Spark API. In that Spark API, I will explain you each tab, like what are the things as admin we can look out for in the different Spark APIs. Okay, tabs कहाँ पे होते हैं, executors कहाँ पे होते हैं, configuration कहाँ पे check होते हैं, ठीक है. तो फिर trouble shooting के लिए error कहाँ देख सकते हैं, ड्राइवर एरर कहाँ देख सकते हैं, ठीक है. ऑल दिस थिंग्स विल चेक ऑन द स्पार्क एपीआई. देन अपार्ट फ्रॉम दैट विल सी द इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स. ओके, जैसे मैंने बताया कि रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि यू कैन नॉट लाइक इंक्रीज द ड्राइवर मेमोरी एंड एग्जीक्यूटर मेमोरी बियॉन्ड मतलब सर्टन लिमिट. ओके, तो वो लिमिट कहाँ से कंट्रोल होती है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ स्पार्कियन, that the configuration parameters will see. And parallelly we see the performance tuning, how like performance tuning के लिए what are, as a admin what are the things we can suggest. Okay, and apart from that we'll cover the troubleshooting part as well. Okay, so when we'll do the demo, we'll cover some of the real time issues as well, which you can note it down. Okay, ठीक है, you will keep the remaining slides for tomorrow. Okay, we'll cover the questions now. One second, guys. Guys, just ping your questions again. Okay, so because I missed me. So Sagar is asking what is blacklisted node in Spark? Does it similar to blacklisted node in the Hadoop? So basically, सागर blacklisted क्या होता है कि मतलब मान लीजिए कि मल्टीपल टास्क आपके पर्टिकुलर नोड पे फेल हो रहे हैं, ठीक है. तो वही क्या होता है फिर उसके बाद वो ब्लैक लिस्टेड हो जाता है, एंड देन Spark or you can say Yarn will not assign this any container on that particular machine. Okay, so the concept is same because here in like we are using Spark as Spark using we are using Spark with the Yarn only. Okay, so whatever the concept of a Yarn is there, same will be applied in Spark as well. Okay. What's the next question? Yahoo Bansal is asking how string processing work on any PG. So Yahoo, the streaming processing like देखिए there are दो टाइप की प्रोसेसिंग होती है, एक बैच प्रोसेसिंग होती है, एक रियल टाइम प्रोसेसिंग होती है, ठीक है. और यू कैन से द स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग, ठीक है. तो बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है कि डेटा आपका पर्टिकुलर इंटरवल के बाद लिया जाता है कि मान लीजिए 24 आवर्स, ओके 12 आवर्स, कि उतना देर वेट करते हैं आप, उसके बाद फिर सारा डेटा लेते हैं. तो मान लीजिए जैसे कि एग्जांपल दिया फ्लिपकार्ट का, ठीक है. तो दिन भर जितने भी ट्रांजेक्शन हुए फ्लिपकार्ट में, जितने भी सेल्स हुए, so after 24 hours, Spark application and the Spark application will go to the Flipkart data and it will collect the data and it will process. That's the batch processing. मतलब इंटरवल से आप क्या कर रहे हो, डेटा के पास जा रहे हो, डेटा फेच कर रहे हो, फिर प्रोसेस कर रहे हो. ओके, whether the interval may be 4 hours 12 hours. ओके, रियल टाइम प्रोसेसिंग में क्या होता है कि कंटिन्यूस डेटा आता है, उसको कंटिन्यूस प्रोसेस करते हो. मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन हुआ, ठीक है, एक ट्रांजेक्शन हुआ, ठीक है. अब जैसे ट्रांजेक्शन हुआ, आप as soon as data आपके टेबल में आता है, उसको फिर आप रीड करते हो, तो द इंटरवल will be very short. Okay, so it's what you say is near real time processing. जैसे ही डेटा आता है उसको लेते हो, उसको प्रोसेस करते हो. so that's the difference between the batch processing and streaming processing, कि जैसे ही डेटा आता है आप उसको प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है. that's the difference between the batch processing and real time processing. And ठीक है, Afshan Sheikh is asking, as we are using Spark on Yarn, then how it allocates the resources. ठीक है, Afshan, that's a good question that we'll cover tomorrow in detail. But as of now क्या होता है कि मैंने जैसे बताया कि resources कैसे मैनेज होते हैं कि Spark Yarn के साथ काम करता है, ठीक है. आप मान लीजिए आपने कंटेनर लिमिट, जैसे कि अपने Yarn में कंटेनर लिमिट होती है कि आपने कंटेनर लिमिट सेट किया है 4 GB, ठीक है. तो 4 GB is your maximum limit, ठीक है. आप if you now you need the executor memory as a 8 GB, ठीक है.
आप एग्जीक्यूटर की मेमोरी आपको 8 GB चाहिए, बट आपकी कंटेनर मेमोरी 4 GB है, ठीक है। तो आप बियॉन्ड 4 GB नहीं जा सकते, बिकॉज आपके जो एग्जीक्यूटर्स है, ठीक है, वो कहाँ पर लॉन्च होते हैं इन टर्म्स ऑफ यान, यान के कंटेनर में लॉन्च होते हैं, यान के कंटेनर में आपका एग्जीक्यूटर लॉन्च होगा, ठीक है। तो उस लिए क्या करना, या स्पार्क विल बी restricted to the what we say the yarn container, okay. So that's how it's controlled. So practically we'll see tomorrow कि जैसे हम क्या करेंगे कल, कि कंटेनर मेमोरी 4 GB देंगे, और देन we'll try to give executor memory 8 GB. We'll see that we'll not able to execute because it's beyond the defined limit of the container, ठीक है। So basically what आप ये समझ लीजिए कि आपके जो एग्जीक्यूटर्स है वो यान के कंटेनर के अंदर लॉन्च होते हैं। तो जो भी यान की रिस्ट्रिक्शंस होगी कंटेनर को रिलेटेड, दैट स्पार्क एग्जीक्यूटर मस्ट नीड टू फॉलो, ठीक है। Prasad is asking, can you explain how data flow from Kafka to Spark and Spark to HDFS? Prasad, it's not like a one-liner question to explain how data flows in Kafka to SDFS. Okay, but I will try to give in simple term. ठीक है, काफका से डेटा जैसे मैं बताया कि इट्स रिले काफ जब काफका से डेटा प्रोसेस करते हैं ना, इट्स रियल टाइम प्रोसेस, देखिए। तो काफका का क्या काम है, इट्स डेटा इंजेक्शन टूल, देखिए। इट विल ब्रिंग द डेटा, ओके। तो जैसे ही डेटा आपके पास आता है, स्पार्क रीड करता है, उसको प्रोसेस करते रहता है, ठीक है। And from Spark to HDFS, मतलब data process, Spark to HDFS is like what we say the uh, पोस्ट प्रोसेसिंग, अब प्रोसेसिंग होने के बाद डेटा एचडीएफएस पे जाता है, ठीक है। तो जैसा ही रीड आप स्पार्क काफका से कर रहे हो, प्रोसेसिंग करने के बाद आप उसको कहाँ रखते हो, एचडीएफएस पे रखते हो। तो स्पार्क टू एचडीएफएस इज अ काइंड ऑफ पोस्ट प्रोसेसिंग टास्क, और वी कैन से द पोस्ट प्रोसेसिंग मैकेनिज्म। तो डेटा प्रोसेस होने के बाद अब अगर आपको उसको स्टोर करना है एचडीएफएस पे, तो डेटा विल बी मूव फ्रॉम स्पार्क टू एचडीएफएस, ओके। So Kafka is like an Spark integration which will require another session to explain how exactly that real-time processing will work. So as of now, for this intention of this session is like batch processing. Okay, real-time processing explain करने के I will require another session, ठीक है। बट इतना समझ लीजिए कि रियल टाइम बस इंटीग्रेट करना होता है काफका और स्पार्क को, और इसमें कैसा है, जैसे ही काफका रीड करता है, स्पार्क उसको प्रोसेस करता है, एंड वंस द डेटा इज प्रोसेस इट विल राइट डाउन द डेटा टू एचडीएफएस और व्हाटएवर द स्टोरेज सिस्टम you define, okay. Then you did not understand what's your question for cost optimization. Can you explain a little bit? Nadeem is asking, currently we are using Spark on Yarn in prod. My previous updated version is called Yarn. So what currently we use is all about Spark on Yarn. Okay. Sachin, I did not understand your question as well. Okay, Kamran is asking, can you please explain which mode is used to production, Spark on Yarn or Spark on Mesos? Kamran, Spark on Yarn ही use होता है, so Mesos is nowhere like I have seen, okay, or heard. So mostly in the production environment में Spark on Yarn ही use होता है, या फिर Spark standalone use होता है. Like in terms of like if you have dedicated mechanism, so you can use the Spark standalone, okay. Spark Mesos बहुत कम use होता है, ठीक है। Raj is asking, please share some daily issues with the Spark as I know how to approach to resolve ticket. Okay. So Raj will see up. So real time issues ना कल हम जब देखेंगे ना, so we'll discuss the real time issues. Real time issues क्या होते हैं, like uh, as a for basic understanding कि आपका ड्राइवर आपकी जॉब फेल हो रही है, ड्राइवर आउट ऑफ मेमोरी, ओके, एग्जीक्यूटर मेमोरी, एंड your client or your developer is not able to connect to Spark, okay, and jobs slow run हो रहे हैं, authentication issues are and connection issues are there. That's the one thing. And users are not able to see the like changes in the like, मान लीजिए कि users ने कुछ changes किए in terms of its environment level, like executor memory, driver memory, and users are not able to see the changes in the code. Okay, that's some of the real time issues. Okay, and some of the related to jars, the configurations. Okay, so वो जो issues हैं हम कल इंशाल्लाह will cover tomorrow, ठीक है। Yeah, March the garbage collection. Yeah, sorry. So garbage collection, जैसे कि आप you know like Spark
runs on the, yeah, containers. Okay, containers use the JVM. Okay, so JVM garbage collection क्या होता है कि it's like kind of heap memory, you can say it. तो यहाँ पे कि अगर मान लीजिए आपकी गार्बेज, देयर इज अ लिमिट ऑफ अ गार्बेज कलेक्टर। ओके, तो गार्बेज कलेक्शन की टाइम आउट होता है एक, और मेमोरी होता है। अगर आपके अगर इफ दैट योर पर्टिकुलर टास्क इज एक्सेडिंग दैट टाइम आउट एंड द मेमोरी, इट विल fail with the garbage collection out of memory error. So that's the control we'll see in the tomorrow as well. Okay, so ये वाला just remind me tomorrow. We'll see how this garbage collection is controlled using the configuration. ठीक है? Nadeem is asking, yes, yes, MapReduce 2 onwards, Aryan itself. Yeah, Akshan, admin related is work on the Spark is mostly is like first task is one time task, what you can say is कि Spark हमको सेटअप करना, ठीक है। इस वन टाइम टास्क एक बार सेटअप होगा, इसके बाद हमको ज्यादातर सेटअप वाला टास्क नहीं होता है, ठीक है। मोस्टली क्या होता है कि वी हैव अदर इश्यूज लाइक परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, कि आपका जॉब, मोस्ट ऑफ द डेवलपर बोलते हैं कि जॉब स्लो रन हो रहा है, ठीक है। So as a admin, we need to see what are the optimization we can do. But okay, so like what we can do like in terms of resources, in terms of environment. Okay, sometimes we need to like play with the new configuration, like what we can say, some of the like input output mechanism, or you can say certain libraries. Okay, so these are the few things as a mostly we need to play with the configuration only in terms of Spark admin task. And what I can say apart from that, yeah, that's the most of the thing I can recall as of now. Okay, Asif is asking, does partition get replicated? Asif, replicated in the sense where did not get replicated. So ideally, as I know, like replicated means that you mean to say that duplicate or partitioning. Are you saying like that? So if you are referring to duplicate partitioning, so I'm not sure. So as I know, for duplicate partitioning will not happen. Okay, because Spark is like itself is a like uniform like is to like processing engine, so it will make sure that there is no duplicate partitioning done. So I'm not pretty sure about this. I also need to check about this replication, or we can say duplication of partitioning. Okay. What is Pranali is asking how to do cost based optimization in Spark. Okay. uh, Pranali, this cost-based optimization is like an internal mechanism which is controlled by the Spark as itself. Okay, and apart from that, I think there's a coding level changes as well, but I'm not sure how it is controlled because it's more related to coding part. So if you yeah, as I recall, there is a like mechanism if you use the like a what is it, broadcast join and has joined. There are some of the joining mechanism. So depends on the like joining mechanism, you can control this like performance tuning related to cost based optimization. So that's the thing as far as I know. So it's more related to development. I'm not very sure like how we can control. So basically, it's controlled by the Spark itself. Okay. Apart from that, I think there is a way to do at the development level as well, using the right approaches to using it depends like consider आपके पास दो tables. Okay. So one you define the data as a left table and right table. Okay. So आप कौन सा joining use कर रहे हो, या inner joining use कर रहे हो, outer join use कर रहे हो. So on the basis of the data and the size of data, you can also optimize your Spark application. Okay. So I'm not 100% sure, and I did not work on it. So I'm not able to give you a complete idea about this cost of this optimization. Okay. Okay. What else question?
Tanvi, we have to create RDD or not? Yes, Tanvi. So, yeah, we have to create the RDD, Tanvi. Okay, so you are like consider आप जो भी जॉब सबमिट कर रहे हो ना, उस सबमिट से पहले जो RDD क्रिएट होता है, then data will be processed. Okay, so as a admin, we don't need to like RD creating RDD is a part of like what you say uh, development task. Okay, तो आप अगर डेवलपमेंट कर रहे हो या फिर कोई कोड लिख रहे हो तो आपको आरडीडी बनाना पड़ता है. So RDD banana in the sense like you need to mention like which data you need to read. Okay, जब आप वो mention करते हो कि ये particular data आपको read करना है तो RDD will be created. So आपको ऐसे मैन्युअली जाके कुछ RDD ऐसा क्रिएट करना नहीं होता. जब आप डेटा रीड करते हो या फिर मेंशन करते हो कि आई वांटेड टू रीड दिस डेटा, RDD will be created. Okay, Pranali is asking what we talk about RDD or data set because RDD is to the concept. Okay, so yeah, Pranal, जैसे मैंने बताया कि this data set and data frame, all these are built on the top of RDD only. ठीक है, तो बैकग्राउंड कंसेप्ट वही है, बस इतना है कि how we read it, because रीड करने के लिए ना there are different अप्रोच कि डॉट आप अगर पता uh, I'm not able to recall this some of the actions कि आप कैसे रीड करते हो डेटा को. ओके, तो देयर आर सम फंक्शंस. ओके, तो आप डेटा रीड करते हो तो उस डिपेंड पे वेदर इट इज रीड फ्रॉम दिस डेटा सेट और डेटा फ्रेम, उसको डिफरेंट कंसेप्ट है. ठीक है, सो द बेसिक कंसेप्ट दिस डेटा सेट, डेटा फ्रेम और डायनेमिक फ्रेम ये सब आरडीटी पर ही बने हैं, लेकिन लाइक डेटा रीड कैसे कर रहे हो वो डिफाइन करता है कि वेदर इट्स अ डेटा सेट और डेटा फ्रेम. ठीक है, what is Prasad is asking what is Spark context. Yeah, Spark context like consider like it's a part of driver, Prasad. Spark context क्या करता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसको एक यूआई पोर्ट देता है. अब जब अगर आपने कभी स्पार्क जब सबमिट किया होगा तो आपको पता होगा कि देयर इज अ पोर्ट 4040. ठीक है, तो सबसे इनिशियल पोर्ट वो एक अपने आप के लिए डिफाइन करता है या ब्लॉक कर देता है. फिर उस पोर्ट के बाद सारी उस पोर्ट पे आपका स्पार्क ड्राइवर लॉन्च होता है. फिर वहां से स्पार्क कंटेक्ट क्रिएट होने के बाद आपका सारा एप्लीकेशन कंट्रोल होता है. ठीक है, तो स्पार्क कंटेक्ट इज नथिंग बट लाइक व्हाट यू से द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर स्पार्क एप्लीकेशन, जो क्या करता है सारी एप्लीकेशन को कंट्रोल करता है. ठीक है, तो उसमें और एक कंसेप्ट ये होता है कि अगर आपका पोर्ट 4040 ब्लॉक है तो इट विल ट्राई टू हिट द अनदर पोर्ट 4041. अगर 4041 भी ब्लॉक है तो इट विल ट्राई टू हिट द 4042. तो सो ऑन, एक लिमिट होती है. इट विल ट्राई टू लाइक see to block the all like a sequence as 4041 4042 40 like that. It will try to block the ports. Okay, tomorrow inshallah we'll see this spark context as well. Okay, one second. Nadeep Mujawar is asking structured form of RDD called data frame. Yeah, Nadeem, you are asking or you're telling, I'm not sure. Yeah, but it's kind of correct. RDD, yeah, so data frame is nothing but we can say structured. अब अगर हाँ तो हाँ, one more concept is data frame is mostly used for the SQL. ऐसे मैं बताया कि आप किस डेटा के साथ डील कर रहे हो, इस ये डिपेंड करता है कि आप RDD यूज करोगे, डेटा फ्रेम यूज करोगे, डेटा सेट यूज करोगे. ठीक है, तो मोस्टली डेटा फ्रेम जो यूज किए जाते हैं वो SQL like what is in it is used for the SQL in like what is for the Spark SQL. Okay, so Spark SQL is deal with the structured data. So that's why we can say this data frame is nothing but is a form of structured data, structured form of RDD. ठीक है, one more question. Mohammed Abbas. Yeah, Mohammed Abbas. We'll discuss this optimization tomorrow. Okay, see how we can do the optimization. Okay, with the help of like configuration level. Okay, so not there are two ways to do Spark optimization, either at the code level or the environment level. ठीक है, तो code level तो हम नहीं देखेंगे. We'll see at the environment level कि हम क्या क्या कर सकते हैं, कि resources कैसे increase कर सकते हैं, what are the configuration we can change. Okay, and what are the like what is the hierarchy of the configuration की फर्स्ट कहाँ पे इम्पैक्ट होगा, कहाँ पे, कि द डिफरेंट हायरार्की कि आप कॉन्फ़िगरेशन एनवायरनमेंट लेवल पे कर सकते हो, आप कोड लेवल पे कर सकते हो. ठीक है, एंड व्हाट इज आप
या थ्री डिफरेंट लेवल्स जहाँ पे हम आप कोडिंग कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए आपने तीनों लेवल पे किया तो कौन सा इम्पैक्ट होगा, किसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, विल सी इट टुमारो इंशाल्लाह। ठीक है। ओके। और दिनेश चौधरी, व्हाट इज एच ए? ओके, नितिन गोइंग। Yaqub is asking gateway to your Spark functionalities. Yaqub, can you just write it down your question again? I did not understand completely. Okay. Anything else? Yeah, Mohammed. This will whatever the we discuss or missed. Okay, na, we'll try to cover all these points tomorrow as well, because practical we'll understand more, because I understand that theoretical concept are a little boring. Practical we'll understand all these concepts in a better way. Okay. Plus, as your cloud engineer, what is okay? Plus, as a Spark like cloud engineer, our task is like I'm into support engineer. Okay, so whatever the task is, so whatever the users get the issues related to the services which I work. Okay, so I mostly work on the Glue, Athena, and what is it, lake formation. Okay, these are the major services we work. So whatever the user face issue related to these services, okay, customer raises the case with the help of chat, email, okay, or phone call. So we'll support them, we'll troubleshoot. Okay, if we are not available, we'll try to replicate our end. Okay, we'll provide the patches. Okay, it's kind of similar to Cloudera. like कोई इश्यू आता है तो हम क्लाउडेरा को रीच आउट करते हैं। ठीक है, तो क्लाउडेरा जैसे लाइक उसके लिए रिजोल्यूशन देता है या उसके लिए पैसेज देता है, सेम वे वी एज अ क्लाउड एडमिन लाइक cloud support engineer, we need to work on the services which we support. Okay. Tanvir is asking, when we use Spark on Yarn, then we do HA of Yarn. Okay. When we use Spark standalone, can we do HA of standalone? Yeah, that's interesting, Tanvir. I'm not pretty sure HA of standalone because it is rarely used in the market, and I have also not tried it. Uh, Not sure, but I don't think so. But if you are using a standalone, uh, and you'll use the HA as well, because standalone mostly used not for testing purposes, because मैंने कभी नहीं देखा कि standalone है Spark is used in a production environment. So I also need to check on the HA of the standalone. Okay, I will check it tomorrow. Maybe inshallah I can get back to you. Okay, I will note it down, that concept. Okay, Smile is asking, sir, what is the real-time issues in EMR? हाँ, इस EMR में बहुत issues है. Like EMR is like not a like it's a one सर्विस लाइक EMR में ना बहुत कुछ आता है, जैसे क्लाउडेरा, जैसे हमारे पास क्लाउडेरा मैनेजर है, क्लाउडेरा मैनेजर में मल्टीपल सर्विसेज आती है, जैसे EMR भी मल्टीपल सर्विसेज आती है. सो अराउंड देयर आर 27 to 30 सर्विसेज इन EMR. सो लाइक इफ यू स्टार्ट काउंटिंग, EMR में HDFS है, यान है, हाइव है, इम्पाला है, ठीक है, स्पार्क है, फ्लिंक है, नाइफाई है, रेंजर है. तो दिस आर मल्टीपल सर्विस. उस सर्विसेज के अंदर फिर बहुत सारे इश्यूज होते हैं. ठीक है, सो एक रियल टाइम इश्यूज, एक वन इश्यूज बोलना, इट्स नॉट लाइक आई कैन नॉट गिव वन इश्यूज, बट जितने भी EMR के कंपोनेंट है उसके अंदर जितने भी इश्यूज आते हैं यू कैन टेक इट. सो वेदर इट्स रिलेटेड टू HDFS, यान हो जाए, हाइव हो जाए, स्पार्क हो जाए, जो भी आप जो इश्यूज यहाँ पर देखते हो हमारे रियल टाइम में, वही इश्यूज EMR में भी कंसिडर कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट जिस ओपन सोर्स इश्यूज EMR में खुद के अलग से इश्यूज होते हैं, जैसे कि ऑटो स्केलिंग होता है, फिर उसके अलावा उसके लॉन्च इश्यूज होते हैं, फिर ऑथेंटिकेशन इश्यूज होते हैं, बिकॉज EMR इंटीग्रेटेड विद डिफरेंट AWS सर्विसेज, जैसे कि S3 हो गए, S3 है, ग्लू है. ठीक है, तो उनके इंटीग्रेशन के इश्यूज आते हैं. these are the few of the issues I can say. Okay, so it is a like a different concept, so it will take time. Okay. Okay, so inshallah we'll start tomorrow sharp. Okay, at 9:30, and maybe tomorrow we'll extend more, and at like time permits we'll cover the AWS Glue as well. Okay, just remind me, tomorrow we'll cover the AWS Glue as well.
Okay, yeah, yeah. Thank you, guys. Yeah, you are free to drop out for now.